Assalamu alaikum students of class 5. How are you all? Welcome to the 7th lecture of SST. Students, in the last lecture before Eid, we started the geography portion of your book from chapter number 1, that was the maps. And we learned about the different kinds of maps and the longitudes and latitudes, the imaginary line on the surface of the earth to locate a place, and the international date line. Today we are going to learn how to study a map. So open up your books at page number 4. Students, we can study a map from 3 points. First of all, we can look at the directions. The directions are the cardinal direction and the intercardinal directions. So let us start reading. When we look at a map, we use the cardinal directions: north, south, east, and west. These are the simple directions as you've learned about them in the previous classes also. And then we also use the intercardinal directions, the northeast, northwest, southeast, and southwest. These are the intercardinal directions, the directions between the cardinal directions: northeast, northwest, southwest, and southeast. Gee, students, the next thing to look at in a map is the grid. All the lines of latitude and longitude form a grid. अब आपको पता है कि longitudinal lines जो होती हैं, these are the vertical lines from north to south, and the latitude lines are horizontals that are from east to west. तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं longitude की lines और latitude horizontal चल रही हैं, तो ये एक grid form करती हैं. These are the imaginary lines, so you cannot actually see them on the surface of the earth. वी ऑल नो दैट के सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं. प्राइम मेरिडियन है, फिर नीचे इक्वेटर है, और इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ की साइड पे जो लाइंस जा रही हैं, और नीचे साउथ की साइड पे जो लाइंस जा रही हैं, और फिर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड पे और वेस्ट की साइड पे, ये सारी लाइंस आपस में मिलके एक ग्रिड बनाती हैं. टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस. ग्रिड रेफरेंस के थ्रू हम एक प्लेस को बहुत आराम से लोकेट कर सकते हैं मैप पर. फॉर एग्जांपल, Karachi is located at almost 25 degrees north and 67 degrees east. ये location of Karachi from the longitude and latitude reference है. This means that 25 degrees north of equator, equator से 25 degrees ऊपर की साइड पर जाएंगे north, तो और प्राइम मेरिडियन से 67 डिग्रीज ईस्ट की साइड पर जाएंगे हम, तो हमारा कराची आ जाएगा. दिस इज द ग्रिड रेफरेंस ऑफ कराची. तो आप कराची का ग्रिड रेफरेंस कहीं पर भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और कराची को लोकेट कर सकते हैं बहुत आराम से. ओके जी, नाउ कम टू द की पोर्शन. Keys. Usually each map also has a key. It tells us what the symbols and colors used on the map mean. Colors, symbols, and patterns help us to find things more easily on a map. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. Come to the next page of your book, students. That is the page number 5. It has a map on it. A map of an imaginary place with a key, scale, and compass directions. So this is the scale, like 1 centimeter shown in this map means 1 kilometer. And then the directions, the east, west, north, south direction, the cardinal directions, and then the key. Key shows us that what the symbols on the map mean. Like the orange line means the road, the railway line is the zebra crossing sort of a line, the river is the blue line, and then the building, all the rectangles and the triangles, the rectangles are the buildings on this map. Then the mosque, then the well, छोटा सा black spot or circle जो है ना, that are the wells. Then the bridge, this is the sign of a bridge. Now try to find the wells by this mosque, by this mosque. These are also wells, the small wells, the big wells, और यहाँ पर भी एक well है. ये सारे wells हैं. And then the buildings, the mosque. And then we can look at this bridge, and then the river, the blue line, and then the orange line is the road, and the railway track. These are all the symbols that show us what things are on this map. For example, 1 centimeter on a map, this is the example for the scale on the map. 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth.
अर्थ सरफेस पर जो स्केल है इस मैप के थ्रू, दैट इज 1 centimeter is equal to 1 kilometer. If the map has shown a very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. अगर आपके पास छोटा मैप है और बहुत बड़े एरिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो 1 centimeter इज इक्वल टू 100 किलोमीटर भी हो सकता है. डिफरेंट मैप्स की के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है जो वो कवर कर रहे हैं. Map also have a compass rose, that shows the directions. Okay, the compass rose shows the general directions, and the arrow tells us where the north is. Now, students, come to the next part, that is using an atlas. As we all know, that atlas is a book of maps. This is a picture of an atlas, a world atlas. Then it has an index, जिसके अंदर इंडेक्स के अंदर नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन, रिवर, वॉल्केनोज सबकी लिस्ट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू. ठीक है, A B C अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू होती है, और इसके अंदर इस तरह से रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं. जिस तरह ये बैंकन का रेफरेंस दिया हुआ है इन्होंने 68A2. 68 इज द पेज नंबर and A2 is the longitude and latitude grid reference of Bankan. Okay. Using an atlas. A book of maps is called an atlas. Every atlas has an index at the back. An index is the list of names of countries, cities, mountain, river, volcanoes, etc. in alphabetical order. Next to the name, the index gives the coordinates of latitude and longitude and the page number of the map where the feature could be found. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने इंडेक्स में देखा, पेज नंबर और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड रेफरेंस दिया होता है उन्होंने to find a place easily on the map. Okay, students, that is the end of our chapter. Your home assignment is question number 3. How do we show directions on a map? You can very easily find the answer in the direction portion. And how can we find a place on a map? Question number 4. We can find a place on a map through the grid reference, the imaginary lines of longitude and latitude that show the location of a place on the surface of the earth. So this is your home assignment. Okay, best of luck. Allah Hafiz for today.